साथ जो आयुष का कैरेक्टर है, ये इनका दोस्त कैसे बन गया? So that was the friendship that I want to explore. Wow. And like you mentioned कि दिव्येंदु का ऐसा कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं लगा देता है, knowingly या unknowingly लगा देता है. दिव्येंदु आप कितना रिलेट करते हो इसके साथ में? क्या आप सच में भी वो दोस्त हो जो आपके फ्रेंड्स कंप्लेन? क्या बोलना चाहता है तू? मैं पूछना चाह रहा हूँ. मैं लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ dude. I'm a very nice and responsible guy. मैं अपने दोस्तों मतलब unknowingly sometimes ऐसे होता है कि किसी दोस्त के साथ आप ट्रिप पे जा रहे हो. unknowingly तो दोस्ती बता पाएंगे मैंने किया होगा, तो knowingly मैंने कभी नहीं किया हाँ है. जी. But yeah, I'm not like Dodo at all. थोड़ा हाँ मस्ती वगैरह लाइफ में चलता है, बट दोस्तों को कभी ऐसे फंसाए नहीं जैसा जो डोडो करता है, उतना इंटेंसिटी नहीं है लाइफ. Okay. And I'm going to be asking you guys about one लग गए अपने वाला कोई मोमेंट है आपका? कभी गोवा गए हो और आपका ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहाँ पे that you can recall, जहाँ पे आप कह सकते हो हाँ यार लग तो गए थे उस मोमेंट में? Does anyone have any such moment? मेरा ना अभी क्योंकि दोस्तों की बात चल रही है तो गोवा में खैर ये बड़े होने के बाद हुआ था. मतलब हम अच्छा खासा आई थिंक एक दो फिल्में भी कर ली थी. तो मेरे जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ अब गोवा जाना था कि मडगांव में तो एक्सप्रेस में जा चुके थे, तो प्लेन में साथ में जाएंगे ना थोड़ा गोवा थोड़ा इस लेवल पे गाड़ी में अभी बार लोग गाड़ी में जाएंगे. तो मैंने ना एक अच्छे होटल में एक स्वीट बुक किया था और सारे दोस्त हम 4 लोग थे, हम वहीं थे. तो ये लोग पहली बार स्वीट में थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे. रात को हमको बाहर निकलना था. तो मेरा जो एक दोस्त है तो उसने रात को जब पार्टी में तैयार होना था तो उसको बाल गीले किए, उसने जेल ली था, तो उसने कहीं से वो कोकोनट का तेल लाया था. तो वो जो पैराशूट की बोतल थी वो उसने उल्टी करके उसने दवाई जा रहा था, उससे निकल नहीं रहा था. वो कमरे के बीच में खड़ा था, हम सब सूट वूट पहन के तैयार कर निकलने आ रहे. तो वो फट गया उसके हाथ में, और जब वो फटा है तो वो सारा तेल एक तो हमारे कपड़ों पे आ गया और वो दीवारों पर चला गया और दीवारों ने सोख लिया और वो दाग बन गया उसके ऊपर. अब मेरे को स्लो मोशन में ऐसा दिखा कि हमको मार रहे होटल वाले, ये क्या तो आई एम नॉट किडिंग यू. उसके बाद हमने अगले 1.5 घंटे पहले तो सूट उतार के हम सब बॉक्सेस में थे. एक को हमने भेजा सर्फ के छोटे छोटे लाने के लिए, फिर हमने दीवार घिसनी शुरू की, फिर हमने एक्स्ट्रा तौलिए मंगाए, ये भी सोचते हुए कि होटल वाले कहेंगे साले 4 लड़के हैं, फिर तौलिए पे तौलिए क्यों मंगाए जा रहे हैं. तब में हमने पूरा झागा में पानी बनाया था. अच्छा, तब का वैसे इस्तेमाल किया तो हमको लगा बच जाएंगे, लेकिन वो जो तौलिए से गीले कर करके हमने वो की थी उसकी पपड़ी बन गई आधे घंटे में. तो बहुत पैसे भरे हमने, बहुत माफिया मांगी. तो वो था एक बचपन के सपने लग गए अपने वाला. That's fabulous, yeah, guys. Amazing. What a I memory. have a story. Yes, which is Kunal, yes. Actually, very apt for this occasion in this film. 7 years ago, I took my friends to Goa on the train. So I guess the same train as opposed to Goa from Mumbai, and it was my first time going to another city via the train. We were super excited. My friends were not from here, so I was really like in that mood of showing off. Yeah, Mumbai, this is Goa. So हम train में थे and we were chilling, and randomly I saw a very big rat right next to my head in the train where I was sitting. And I गोवा जा रहा था वो भी. yes, yeah, and I have a fear of rats. Means like it's very traumatizing. So I screamed and I started running and I don't know where to go in the train. Like, where do you go? You jump off the train, you know? It was that bad. So, and my friends, they're like, what is wrong with her? And I'm like, screaming, running. So then they were looking for me and they found me almost near hanging off the train because I was so scared to go back inside the train. Oh The my train God. is going and I'm like, Imagine नोरा बाहर लटकी थी, चूहा भी देखने आया, क्यों हो गया? yeah, and there was like a good 10 hours left to reach Mumbai, to reach Goa by that time. So that was the worst 10 hours of my life. Exactly. Can't even imagine those 10 hours how you may have No, when I passed. reached Goa, I was like done, finished. Did you ever take a train again after that for Goa? I mean, in Maharashtra, yes, but to But another not that one because that particularly reminds you of that city. very The scene. rat. Yeah. Okay, गुच्छा जी जो को प्रोड्यूसर है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कंसिडरिंग कि एक्सेल एंटरटेनमेंट का इतना अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है with such friendship films like दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कुकरे, तो what exactly appealed to you in this film? Hear me? Yeah, you can hear me. Yeah. Actually, I always knew Kunal was a really good actor, but when he even narrated this script was, I realized that he's also a really good writer.
And then when he directed it, we realized he was a really good director also. It is just a coincidence that it happens to be about three friends who are trying to fulfill their childhood dream of going to Goa. It just so happened that he narrated it to Excel and Ritesh and Farhan really liked the script. And it's a coincidence that it's three friends and it feels like a Dil Chahta had gone wrong. It's a pure coincidence. I think this is a story that Kunal has been living with and dreaming for a really long time. So it's just the script that really appealed to all of us. Fabulous. And I will be asking Pratik that आप इतने amazing और hilarious लग रहे हो इस trailer में. Comedy is coming so naturally to you. So are you considering more comedy roles henceforth? Of course, yeah. I always felt that comedy is a difficult genre, but I love comedy. This is for the first time that I have explored comedy on screen. इतने सालों से स्टेज पे मौका मिला था, किसी ने कॉमेडी एक्सप्लोर नहीं की थी मेरे से. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन एंड आई एम हैप्पी टू व्हाटएवर दैट आई हैव सीन राइट नाउ. हमने भी ट्रेलर अभी पहली बार देखा है, तो मेरा भी एकदम फ्रेश रिएक्शन है. And from what was actually my idea. मैंने प्रतीक को एक प्ले में देखा था और मैंने कुणाल को बोला कि बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, उसको फिल्म में चांस. पूरा स्टोरी टमाटर. हाँ, तो मैंने कहा लेकिन तू ये पिक्चर कर रहा है तू मुझे क्यों सजेस्ट कर रहा है. And Pratik, from the looks of it, मतलब जितना मैं आपको अभी कुछ टाइम में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, you look like the funny friend in your group. Is that so? Can I say that? Yeah, no, he's like the sensitive friend. Oh my, he's such a fragile human being. It's hilarious. He's allergic to air also. How do you say that? In the film. She's talking about the character in the film. Character, no? Yeah, right. You have to see the film and then you'll understand my joke. मतलब मेरा हमेशा ऐसा होता था ना कि मस्ती करो पर कभी पकड़े मत जाओ. क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ मेरे पिताजी टीचर थे. तो कुछ भी होता था तो सारे दूसरे टीचर्स एक ही जवाब देते थे कि तुम जैन भाई के बेटे हो, कैसे हो. तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि बहुत ही सीधा साधा दिखना है, हमेशा एकदम ठीक ठाक रहना है, पर मस्ती करके कभी पकड़े नहीं जाना. सो आई वाज ऑलमोस्ट दैट काइंड एंड आई एम स्टिल द सेम. बाकी तो मेरे दोस्त ही बता पाएंगे यार, इन लोगों ने जितना मुझे देखा है, आई गेस देवेंदु, कुणाल, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एवर गोवा ट्रिप विद फ्रेंड्स व्हाइल शूटिंग द फिल्म. सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था सेट पे? Devendu. सब एक दूसरे की तरफ. दिव्यंगु मस्तीखोर भी था और इसका नाम सेट पे पापा की परी पड़ा था क्योंकि ये थोड़ा टच भी टाइप है. पहले मुझे लगा था ये मस्ती कर रहा है, लेकिन ये सीरियस था. वो जो बेड का आपने देखा ना बेड में, उसमें एक छोटा सा इनके बीच में झगड़ा होता है, तो बीच शॉट में दिव्यंगु ने रोक दिया, लग गई मुझे, सब रुक गए. और वहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट सेट पे ऐसा होता है, अगर एक्टर को लग गई तो बर्फ रेती स्प्रे सब रेडी होके आ जाता है. तो सारी चीजें एकदम स्टॉप ब्लॉक में एंटर हुई और हमने कहा लगी, तो उसने ऐसे शोल्डर पे हल्का सा नाखून का सा स्क्रैच था. तो उसने कहा ये इसने नाखून मारा मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग गई, मैं नहीं करूंगा. But that's fine. I'm a little sensitive and soft, yeah. Yeah. तो इसने रखा था पापा की परी का. हाँ, जिसने इसका नाम रखा. एक्चुअली सेट पे हमारे सेट पे दो दीवार थे. Oh. Yeah. Oh yes. He was the first one and then Sheila. I think he was more diva than me, for sure. There was always competition between them. There was, I must If agree. you guys insist. There was. I really like the chemistry that you all have off screen also. Would that be a possibility कि आप लोग फ्यूचर में असली में गोवा ट्रिप्स कर रहे हो साथ में? Just for relaxing. I don't think so, honestly. No, why not? Because आपको ये लोग नाखून मार रहे हैं. पूरा फिल्म कर लिया कि क्या आगे बढ़ना है. ऐसी लीजर के लिए. I have to say though that when shooting in Goa, all three of them, Pratik, Devendu and Avinash, used to have dinner together every day. They became really good friends over there. Also the credit goes to Kunal Khemu because he's such a good director. तो हमारा 12 घंटे का शिफ्ट होता है ना लाइफ, लेकिन हमारा कोई भी शूट कभी 6:30 7 से ज़्यादा नहीं चलता था इवनिंग. तो आवर इवनिंग्स यूज्ड टू बी फ्री. तो उसमें ही होता था जैसे ही मतलब लास्ट सीन होता था उससे पहले हम लोग डिसाइड कर रहे होते थे हमें कहाँ जाना है. तो ऑल थैंक्स टू एवरी नाइट वी पार्टी. थैंक यू. पर कॉल टाइम फिर सुबह होता होगा ना एकदम. हाँ, बट रिस्पॉन्सिबली. Responsibly party. Yeah. Not like how you. No. Okay. Nora, one question for you. I will ask you, how was it working with Kunal as a director? And of course, you've explored the whole comedy genre in this one. How is that for you?
It was amazing. I always knew Kunal was like a fantastic actor. And when I seen him direct, I'm like, and I tell him all the time, like, Kunal, like, you are an outstanding director. He's so hands-on. He knows what he wants. He has a clear vision. And for me, I'm like a director's actor. I need to be told what to do. You know, like, tell me, I'll look at you, and then I'll do the same thing on camera. There are some directors who really just say, go for it, do whatever you want, and you feel lost as an actor. But he directs you so well, and I learned so much on set as an actor. I feel really happy, and everywhere I go in the industry, I'm like, guys, Kunal is the director. He is the director. You need to call him for your scripts, you need to call him for your projects, because he can get the acting skills out of you. And I felt that. And when I'm with people like Divindu, Pratik and Avinash, who are actually really, really good actors, you feel like tapping into that side of you as an artist. So I go learn so much on this set. Yeah. And you know, in itself, you are such a goofy person also. You've seen all your goofy videos on That's the why he internet. casted Yeah. me. That's why, because Must have come so naturally for you, the whole comedy genre in this one, right? I mean, what do you think? Kunal, what do you mean? Yeah, I mean, little do you know, like, there's a thug on set, and that's not of a thing. Who's actually like, मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता था 4 लड़कों की पिक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि ये this wasn't one of the sets where, you know, there was a boy gang and none of us like feeling left out or anything. In fact, all the boys were like, yeah, she's bullying us. So it was great having her. In fact, you know, it's right, like, I'd seen their energy about her, and my character that I'd written of Tasha was very similar to her. So I actually needed her to just be herself most of the times. And I'm very actually happy and blessed that, you know, I sit here today talking about a film that I envisioned like alone in a room, and I never knew that the words that I was writing were actually going to be, you know, put into characters. Like, there will be money put behind it. I'll get to shoot it with the vision that I have, and there'll be characters who will come and make it come alive. So it's still not hit me actually. I think वो एक बार picture 22 को आएगी ना, उसके बाद मुझे ये थोड़ा it'll hit me that it's actually happened. So I feel really blessed that I've got such an incredible team, such incredible producers who kind of believed in not just the script, but my vision and me as a director, and allowed me to kind of go there and do exactly what I wanted to do. Never once did they question कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या वैसा क्यों कर रहा है. They said, if you're trusting in him, then let him go and do it. And I really hope that you know, this is just a glimpse of a film that will entertain everybody, and it'll be worth all our while. नहीं तो हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे हमने कैसे मजे किए. आइडिया ये है कि पिक्चर देख के आपको मजा आए. And I really wish you all the best for the film, and I can sense that my friends from media want to ask you a lot of questions as well. So we're going to be passing you the mic. Anybody who has the very first question, or you all can lift up your hands and we'll see who's the lucky one who gets the mic first. So okay, we have a question from there. Yes, ma'am. Hello. Yes. I think. Sorry, can you increase the volume of the mic? I think it's. A little- Hello. This side. Yeah. Firstly, trailer looks just amazing. So, when I say Goa, what is the first thing comes in your mind? All of you. The beach. Goa. Goa. Kunal. जी, मेरे लिए ना बीच ही एक्चुअली. मुझे ऐसा याद है कि जब हम जू बीच पे जाते थे ना, तो जो दोस्त गोवा जा चुके थे ना, वो शौक के लिए बोलते थे, ये देखिए पानी में तेरे को तेरा पैर दिख रहा है क्या, तो अंदर जा. तो बोला नहीं, तो भूरा है पानी. अरे गोवा में तो पूरा भी घुस जाएगा ना, तो उधर तेरे को पैर दिखेगा. तो मैं जब पहली बार गोवा गया था और उधर ब्लू कलर का पानी है, तो मैं बहुत अपसेट था कि मुझे कोई गलत बीच पे ले आया, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश पानी था और सिर्फ घुटने से पैर दिख रहा था, छाती तक फिर पैर नहीं दिख रहा था. तो मुझे हमेशा वो याद आता कि पानी का कलर ब्लू नहीं था. Pratik. For me, Goa is friends, because हमने सालों से सिर्फ दोस्तों के साथ प्लान्स ही बनाए, कभी नहीं गए. तो इसलिए मैं गोवा की मेमोरी दोस्त वाली रह गई है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्तों के साथ जाना है और कभी नहीं जाता है. Maya. मेरे लिए, मैं वैसे ना कोकण से हूँ, तो हमारे से बहुत पौने घंटे पर गोवा है. तो हमें वैसे लगा नहीं था कि अरे गोवा लगा था, क्योंकि जो गोवा में है सब हमारे गाँव में. लेकिन गोवा का एक लेकिन हमारे यहाँ बोलते थे गोवा जातस
की त्या पिऊन जाता यानी समुद्र और सब हमारे गांव में भी है तो मेरे को मैं देखो So cheap booze you mean? Yeah, cheap booze. The beach, coconut water. I don't know. वैसे भी जब मैं गोवा जाती हूँ मैं अकेली जाती हूँ just have a break. So their Goa and my Goa is not the same. Their Goa is like yeah let's party yeah. Mine is let's sleep on the beach, let's tan, swim, go home. That's it. You do that Goa yoga course also, ना? वो भी बताना. That Yoga? yoga and spiritual courses No, you I go for. don't even do that. Just swim, that's it. And that's it. Kunal, I want to know, like, you are a good actor. Now you have gone the writer, director. So, what difference did you find, and any challenges, or what do you love about it? Being a director and writer. Ma'am, actually, I've grown up on sets, so I've always loved everything about filmmaking. I've always been intrigued by it. I've never had the courage to kind of say कि अब मैं जाके ये करूँगा. But I think opportunities are found when you're in your worst space. So like I said, I've found the writer in me who wrote this film, and then I think when you had the opportunity with a company like Excel who said go there and do this, you put all those years of experience on set where you're actually watching and learning. तो एंड में यही हुआ, ये फिल्म बनाने से पहले जो 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने किए तो मैं थोड़ा ज़्यादा और अवेयर हो गया था कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, what are the things that I need to kind of catch on to. And while doing this, I was पहले तो बहुत सारी रातें नींद ही नहीं है जब फिल्म शुरू करने से पहले कि सबसे पहला थॉट ये था मन में कि how will I know that I've had the enough footage, या मैं टाइम पे ख़त्म कर पाऊँगा उस दिन काम के लिए. I don't want to annoy my actors, or I don't want the HODs to feel कि he doesn't know what he's doing. So I put in a lot of that effort, and I think the only thing that I was still nervous about was the fact that because I've been an actor, when I'm talking to an actor, how do I kind of put that through? I don't also want to be a director who's just telling them exactly ऐसी acting करो, because I also don't always like that. But then, like Nora said, sometimes there are actors who don't get what you're saying, so sometimes you got to show that to them. So I really was more concerned about how I communicate with my actors, because I truly believe that if the characters in this film didn't work and come alive, then no matter how good or beautiful we made it look, it wouldn't work. And I'm very blessed, like I said, to have actors who kind of caught on to that right from day one. Which is the best thing that you like as a director or actor? What is the best? Which you enjoy? I think perks, दोनों के अपने अपने perks हैं. मुझे ऐसा लगता है कि as a director you just find the complete freedom to make your voice heard in a way. Like जब किसी फिल्म पे आप एक्टिंग करते हैं तो आपके पास कभी-कभी सीन को लेके सजेशन होते हैं या फिल्म को लेके सजेशन होते हैं, या कैसे कोई सजेशन आप शेयर करते हैं, कहीं आप नहीं करते, आपके मन में रह जाते हैं. लेकिन क्योंकि ये लिखी भी खुद थी और डायरेक्ट करने का मौका मिला, आई फील दैट 100% जो मैं चाहता था करना इंस्टिंक्टिव लेवल में मुझे करने का मौका मिला. तो आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ गाली पड़ेगी तो मेरी, और अगर अच्छी लगेगी तो वो भी मेरी. Hello, here at the left hand side. Shilpa here from Mayapuri magazine. प्रतीक, मेरा सवाल आपसे है कि बिग स्क्रीन पर आपका ऐसा अंदाज शायद ही हमने देखा होगा, आपके फैंस ने, आपके ऑडियंस ने. तो क्या रीजंस रहे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस मूवी से जुड़ने के लिए, इस किरदार को यस करने के लिए? जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्क्रीन पर कॉमेडी पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो दैट्स द रीज़न दैट नोबडी हैज़ एवर सीन मी डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑन स्क्रीन. जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो जिस दिन कुणाल ने स्टोरी नरेट की थी, आई कुड सी द होल फिल्म इन द नरेशन इटसेल्फ, बिकॉज कुणाल ने शायद इतना समय बिताया है इस स्क्रिप्ट के साथ, हर एक किरदार के साथ, दैट ही इज लिव्ड practically all the characters. So when he narrated all the characters and the whole story, I practically saw the film and I realized that this is something that I would want to explore. And as an actor, I constantly feel that experimenting with different genres, experimenting with different characters is one should do, and that's what I did with this film, and I hope that it works with the audience. Hi Nora, this is Vinamra from First Post. This is actually your foray into comedy. So, what were the challenges that you faced, and Sorry? what were the challenges that you faced because you are now stepping into the world of comedy? And how is it like being directed by Kunal khemu?
I love being directed by Kunal. He just knows what he wants, his vision is very clear, and he understands comedy. See, here's the thing about comedy. It's hard for directors to actually get it right. I think it's either they do slapstick comedy, which is loud and in your face, or situational comedy. But situational comedy is very hard. How do you get the right one-liners, the right dialogues, the right expressions? How do you make it feel real and funny at the same time? So I'm very impressed by how Kunal managed to do it because it seems so natural, so seamless, and that's the type of comedy I wanted to be a part of. For me, I didn't have any difficulties per se on set. I think just day one, I was a little bit nervous because when I met Divindu and Pratik and Avinash, I was like, oh my god, like, you know, he's come from Mirzapur and, Scam. I'm like, oh my god, they're such good actors. I felt a little bit out of, when you go to high school and you're the new kid in high school, I felt like that for some time, but I guess after like a day or two, I realized he's so funny, his humor is like my humor, so we clicked really quickly, and Pratik and Avinash are so sweet, so they didn't make me feel like an outsider or something, they really kind of embraced me. So I would say from my whole journey here in the industry, this film has been one of the best experiences that I have had on set, hands down. Yeah. हेलो यहाँ पे आपकी सक्सेना मेरा सवाल कुणाल जी से ही है कि बहुत साल पहले पिक्चर आई थी बॉम्बे टू गोवा जिसको आज भी याद किया जाता है और उनके कैरेक्टर्स को भी याद करते हैं आपकी फिल्म के ट्रेलर से ही लग रहा है कि पिक्चर हिट है थैंक यू मैम थैंक यू क्योंकि हम लोग अभी इतना हंस रहे थे तो ये तो ट्रेलर था तो पिक्चर तो मतलब फिर बहुत खतरनाक होने वाली है थैंक यू सो मच तो मेरा सवाल ये था कि आप बॉम्बे टू को आपके दिमाग में थी या मतलब कुछ आपने खुद ही ये सब क्रिएशन आपका रहा? मैम ये पूरी कहानी ओरिजिनली है मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ महमूद साहब का उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं उनका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है बॉम्बे टू गोवा की एक खासियत ये भी थी कि वो इतने सारे किरदारों से बनी थी कि वो सारे किरदार आपको याद रहते हैं लेकिन इस फिल्म की कहानी वैसे ही अलग है लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप जब एटलीस्ट क्योंकि मैं फिर भी बच्चा मानता हूँ अपने आप को मैंने बहुत फिल्में देखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का कोर्स ही था जो आप कर रहे थे यू ऑलवेज टाइमिंग समझ रहे थे आप ह्यूमर किस तरह का है तो जितनी फिल्में आपने देखी है जो आपको अच्छी लगती कहीं ना कहीं वो आप घोल के पी जाते हैं तो वो वैसे की वैसे ना उतरे लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपकी जो इंस्पिरेशंस रही हैं दे काइंड ऑफ गाइड यू इनटू राइटिंग ह्यूमर लाइक दैट तो आई थिंक आई विल डू अ बैक फ्लिप इफ आई कम क्लोज टू Bombay to Goa in my first film but thank you so much it's really encouraging to know that you really enjoy the trailer. Hi Kunal. Yeah, hi. My name is Chaitanya Padkar. I have met you as a child artist in Amerai Pyar Ke, and I remember Amir Khan praising your acting talent that you go places. So I wanted to know in this movie, was it a conscious decision that you didn't want to face the camera? So honestly, जब मैंने ये लिखी थी तो मैंने as an actor लिखी थी अपने लिए तब मेरा ये सोचा नहीं था कि ये मैं बनाऊंगा but once we knew that I was going to direct it, I think it was only logically right for me to say कि एक नई चीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ उस पर ये अभी हावी नहीं होने देता क्योंकि अभी I really want to enjoy this process of being a director. और मैंने भी अपने दिमाग में जब ये सोचा कहीं तो लालच भी था कि नहीं है वो किरदार मैंने अपने लिखा है बी नाइस शूट मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जब शॉट लगा रहा हूँ उसके बाद मैं शीशे के सामने अपने बाल ठीक करूंगा मैं कैसा दिख रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ कि ये सीन वर्क कर रहा है कि नहीं इसके एस्थेटिक्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ और क्योंकि ये पहली आउटिंग थी आई जस्ट वांटेड टू डू 100% जस्टिस टू जस्ट बीइंग अ डायरेक्टर तो ये कॉन्शियस एफर्ट ही था. हेलो या देवेंद्र आपके लिए या आपके सामने बैठा हूँ आपने इस मूवी में एक्टिंग की है because you are very humorous you're very humorous and also tell me more about your role because you seems to be यहाँ पर भी very humorous so you're commenting on everybody's. Sir, honestly I mean I enjoyed playing this character क्योंकि काफी सालों के बाद कॉमेडी कर रहा था but to play Dodo was not easy. It was a task because अगर आप उसको देखेंगे फिल्म में तो उसका एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी है वो एनर्जी बहुत हाई लेवल की है
और मैं कॉन्स्टेंटली आई रिमेंबर आई यूज्ड टू आस्क कुणाल यार ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कुणाल ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे करूँ क्या? ही वाज लाइक नहीं नहीं ट्रस्ट मी, जैसे कर रहा है वैसे ही करता रहे, सही आ रहा है. So although it was a great experience, but I was really scared while performing it. I'm very scared how people would actually see it और उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा. But yeah, let's see. I want to just keep my fingers crossed. Okay, guys, we have one more question. Anybody wants to ask? हिंसवर्धन न्यूज़पेपर, शिवजी रामपुरी जर्नलिस्ट. मेरा सवाल कुणाल जी से है. फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा रहा. हाँ, ट्रेलर देखा. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिल्म देख करके कहीं आपको लगा कहीं पर कि मुझे भी इसमें एक्टिंग करनी चाहिए थी? मुझे ज्यादातर फिल्में देख के ऐसा लगता है कि मुझे उनमें नहीं, ये आपने लिखी है इसलिए पूछ रहा हूँ. उसमें तो और भी लग रहा था कि मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये निर्णय पहले ही ले लिया था मैंने, तो फिर मैं उस पर अटल रहा और उससे बिल्कुल नहीं डगमगाया. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम प्योरिटी के साथ मुझे वो किरदार दूसरे एक्टर्स ने आके उन्हें किस तरह ढाला, क्योंकि मैं डोडो को अपने हिसाब से जैसे सोचा था वैसे ही करता, लेकिन मेरे बताने के अलावा भी दिव्येंदु ने एक एनर्जी डाली उस किरदार में, पिंकू प्रतीक ने एक एनर्जी डाली जो शायद मैंने एग्जैक्टली वैसी नहीं सोची थी, लेकिन वो और उभर के आई. तो आई थिंक आई रियली आई एम हैप्पी दैट आई चोज टू जस्ट बी अ डायरेक्टर ऑन दिस वन. You guys, we have more questions. Yes. Kunal sir, this side, Vishal Ambani here. Sir, being a director, this is something new we are going to see. But अगर आपकी फिल्मों की बात करें, इतने सारे फिल्म आपने की है, बट कोई ऐसा फिल्म जिसका सेकंड पार्ट आप करना चाहो, जैसे कि कलयुग हो गया, गोगा गोवन हो गया, एंड भाग धोनी हो गया, तो कौन सी ऐसा पहला स्क्रिप्ट है जो आप चूज करोगे जिसका सेकंड पार्ट आप करना चाहोगे? देखिए, मैं वो पब्लिक डिमांड से मुझे लगता है गोगा गोवन होगी, क्योंकि वो फिल्म लिखी गई थी एक सीक्वल बनने के लिए, तो और उसको इतना प्यार आज तक मिला है, तो आई थिंक इमीडिएट चॉइस तो वही होगी. बट मैंने बाकी फिल्मों में, क्योंकि उनकी कहानियाँ कभी ऐसे सीक्वल के लिए लिखी नहीं गई थी, तो आई कांट से कि यू नो आई मीन इट विल बी ग्रेट अगर कलयुग का एक इमेजिन किया जाए यू नो पार्ट 2, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. अदरवाइज अदर देन दैट इट विल बी गोवा. एक और सवाल होगा सर, जिस तरह गोवा जाने का सपना हर बच्चों का रहता है, जैसा फिल्म इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है, बट अगर हम गोवा की बात करें, डार्क सीक्रेट्स काफी सारे हैं, जैसा गोवा में भी एक डार्क सीक्रेट दिखाया गया था और इसमें भी एक डार्क सीक्रेट दिखाया गया था. Was there in your mind कि हम लोगों को और नॉलेज करें कि गोवा में एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअली डार्क सीक्रेट की जब आप बात करेंगे, इसमें ऐसा कोई डार्क सीक्रेट है नहीं. इनके साथ एक घटना घटती है, अगर हम बात करें इनके साथ एक घटना घटती है, और वो किस तरह से घटती है वो मेरे ख्याल से आज तक किसी फिल्म में उस तरह से नहीं दर्शाया गया है, और ये फिल्म उस बारे में नहीं. इनफैक्ट इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसा गोवा आपने आज तक देखा है, वो जानबूझ के भी वैसा एक्सप्लोर नहीं किया है. वो थोड़ा अलग लगेगा आपको गोवा, वो शायद फिर आपको लगेगा अरे गोवा का प्रॉमिस था, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन उसका एक रीज़न है जो आप फिल्म में देखेंगे. बाकी जहाँ तक वो डार्क सीक्रेट की बात रही, तो वो उस बारे में फिल्म है ही. Hi Kunal, Shweta here from My Yogangas. Hi. So Kunal, comedy casting is important part. So आपका कितना इनपुट रहा कास्टिंग के लिए? Which character was important for you? उनको बोल्ड करना ये फिल्म में कितना इम्पोर्टेंट था या टफ था? All of them बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यू नो आपने जो किरदार सोचे हैं उनमें जान डालने वाले हैं ये लोग. तो कहीं ना कहीं जैसे मुझे याद है जब मैं ये लिख ही रहा था, सबसे पहला जो क्लियर इंसान मुझे उसमें नजर आया था वो था उपेंद्र लिमय, क्योंकि उनके साथ मैंने ट्रैफिक सिग्नल में काम किया था, उनका बाकी काम भी मैंने देखा. तो जब मैं मेंडोजा तक पहुंचा तो उसकी चाल ढाल और वो सब मुझे वो पहले से ही दिख रहे थे. जब तीनों लड़कों की बात आई तो पिंकू के लिए सबसे पहले मैं प्रतीक का काम पहले से जानता हूँ, मुझे पता था अभी हर्षद मेहता आया है, अभी ये बहुत जल्दी टाइप कास्ट होने वाला है, इसको सब सीरियस काम देने वाले हैं, तो इससे पहले कि कोई और इसको कॉमेडी दे, आई रियली वांटेड टू गेट हिम बिकॉज़ आई आल्सो वांटेड टू गेट अ गुजराती एक्टर टू प्ले दिस गुजराती कैरेक्टर इन माय फिल्म. दिव्येंदु से मिलने के बाद, दिव्येंदु एक्चुअली जनरली मैं जब उसको पहली बार मिला तो इट्स नॉट लाइक इट स्ट्रक मी कि दिस इज माय डोडो, बट जब मैंने दिव्येंदु के साथ टाइम स्पेंड किया, बातें की, इस किरदार के बारे में बात की, एक्सप्लोर की, तो मुझे ऐसा लगा एक नई एनर्जी आ सकती है. और इसीलिए जो ये कह रहा है ना कि ये बिल्कुल अलग इससे करवाया गया, तो मेरा इसको पहले मैंडेट यही था कि ये तभी होगा जब तू पहले दिखेगा भी ऐसा जैसा तेरे को पहले कभी नहीं देखा है, और एक्टिंग भी मैं वैसी करवाना चाहता हूँ जो पहले कभी नहीं. तुझे भले ही डाउट लगे मगर मेरे पे भरोसा कर ले, बिकॉज आई हैव इमेजिन्ड डोडो इन अ सर्टेन वे एंड जस्ट गो विद इट. एंड थैंक यू दिव्येंदु फॉर
बिलीविंग मी ब्लाइंडली एंड मुझे दिखता था सेट पे दिव्येंदु कभी कभी ये दाढ़ी और निकालनी है 2 ही दिन की है यार नहीं पूरा क्लिप की है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मैं थोड़ा आराम से करूं नहीं so but I think he's brought another energy to Dodo which I kind of has gone to the next level. अविनाश again क्योंकि उनको अभी तक हमेशा सोलो लीड्स में और स्लाइटली बम्बई मेरी जान का किरदार हो गया या लैला मजनू हो गया बहुत ही सीरियस और इंटेंस बिहार डायरीज में गैंगस्टर का कैरेक्टर तो I really wanted to get him to do something light-hearted and also put him in a mix where he's with these other actors and comedies like I said is all about action reaction और इन तीनों के सुर अलग होना बहुत जरूरी थे तभी वो सिम्फनी बन पाती नहीं तो तीनों के अगर सेम सुर लगते तो मजा नहीं आता तो वहां से और छाया जी वाज लाइक दैट कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में कंचन कोहली वाज ऑलवेज लाइक अ कॉमिक बुक कैरेक्टर एंड आई सेड कि आई विल जस्ट नो हु दैट एक्टर इज व्हेन आई सी दैट एक्टर एंड इट सो हैपेंड कि मैंने कौन प्रवीण तांबे में देख रहा था और उसमें सिर्फ मैंने इनको सिर्फ खड़े हुए देखा था इन्हें बोलना भी शुरू नहीं किया था श्रेयस के पीछे खड़े थे और मैंने कहा ये नहीं कंचन कोहली और मैंने श्रेयस को फोन लगाया मैंने बोला यार ये एक्टिंग से मेरे को काम इनसे अरे वो अंधाधुन में थी एंड देन आई रियलाइज दिस इज द सेम पर्सन हु वाज इन अंधाधुन एंड लव्ड हर एज एन एक्टर इन दैट एंड हर परफॉर्मेंस सो आई एम वेरी हैप्पी दैट छाया जी केम ऑन बोर्ड एंड शी मेड दैट कॉमिक बुक कैरेक्टर कम अलाइव फॉर मी हाय प्रतीक दिग्विजय हियर दिग्विजय हियर फ्रॉम बॉलीवुड प्रेमी जब कुणाल आए आपके पास में ये फिल्म लेके तो किस तरह से नरेट किया उन्होंने और व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट पहला थॉट क्या था ये फिल्म सुन के नरेशन सुन के एक्चुअली मैं कुणाल का फैन रहा हूँ खास करके इसकी कॉमिक टाइमिंग का फैन रहा हूँ जितना भी मैंने इनका काम देखा है जब मुझे पता चला कि ऐसी फिल्म बन रही है पहले मुझे पता नहीं था दैट ही इज रिटन एंड ही इज गोइंग टू डायरेक्ट जब मैं जा रहा था वहाँ पर मीटिंग के लिए तब मुझे फाइनली पता चला कि अच्छा उसी ने लिखी है और वही डायरेक्टर व्हेन ही स्टार्टेड नरेटिंग द स्क्रिप्ट मैंने अभी बताया कि उसने सारे किरदार परफॉर्म किए हैं तो ये पूरा 2 घंटे का एक मोनोलॉग किया कुणाल ने नरेशन पे एंड उसकी जो थॉट क्लैरिटी थी हर एक सीन के बिगिनिंग में एंड पे हर एक कैरेक्टर के छोटे छोटे न्यूएंसेस में दैट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट ही एक्चुअली नोज द होल स्क्रिप्ट एंड ही इज द बेस्ट पर्सन आई गेस फॉर दिस फिल्म टू बी डायरेक्टेड सो मैं जितना हंसा था नरेशन के टाइम पे आई गेस दैट वाज फिर उसके बाद मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा हमने तो फर्स्ट हाफ में जब चाय के लिए ब्रेक लिया था तभी बोल दिया था कि लेट्स डू इट कुणाल जी टाइम जैसे हियर सर एक खास सवाल आपसे बचपन के सपने बचपन में आपका ऐसा कौन सा सपना था जो आप जिसे आप पूरा करना चाहते थे बचपन का मेरा कोई सपना यार लकीली लाइफ इज बी वेरी काइंड कि अभी तक जितने सपने थे उनमें से आधे मैंने कर लिए बाकी जो है वो मैं कर लूँगा लेकिन मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस भी उसको लेके क्योंकि आई थिंक सपने बयां कर दो पूरे होने से पहले तो शायद पूरे नहीं हो इसीलिए इस फिल्म की बात भी मैंने तभी की जब ये फिल्म बन रही थी और तैयार हो गई थी बट लाइक आई सेड लाइफ इज बीन वेरी काइंड एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू मेक माय ड्रीम्स कम ट्रू Okay, thank you guys. That was all the time that we had for the